Hello, so we just reached this place called the Clay Oven where we are kind of having brunch. और ये मुन्नार के रास्ते में ही पड़ता है. अपेरेंटली इसके बाद पहाड़ वाला रास्ता शुरू हो जाएगा. तो अभी हम कोचीन एयरपोर्ट से ही आ रहे हैं और it seems like a nice place. So let's see how the food is here. मुन्नार के रास्ते में दो वाटरफॉल्स भी पड़ती हैं जिनका नाम चिन्नाकनैल और वलारा वाटरफॉल है, जिनमें से एक तो बिल्कुल ही ड्राई थी इस टाइम पे. आई गेस मानसून इज़ अ बेटर टाइम टू विज़िट द वाटरफॉल्स ऑफ मुन्नार बिकॉज तब इनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है. ये बहुत सुंदर भी लगती हैं. हम यहाँ पर स्पाइस गार्डन में आए हैं और ऑनेस्टली अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, आयुर्वेदा एंड स्टफ, सो इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. नहीं तो नॉट सो मच. लाइक जब गाइड बता रहा है तो इट्स इंटरेस्टिंग, बट हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड है बिकॉज वी बिन ट्रैवलिंग सिंस लाइक 11 o'clock yesterday night, so we're pretty tired now. But it's an interesting place. और यहाँ पर लाइक दो टाइप्स के टूर हैं. एक तो आप वॉक करके कर सकते हो, दूसरा है यू कैन टेक एन एलिफेंट राइड एंड ऑब्वियसली आई डिडंट टेक द एलिफेंट राइड. तो एलिफेंट राइड का 600 पर पर्सन है एंड वॉकिंग में 100 पर पर्सन है, वेयर द गाइड इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. और इंटरेस्टिंग स्टफ हियर. काफ़ी सही सही प्लांट्स हैं और जो हम यूज़ करते हैं अपने किचन में वो एक्चुअली देखने को मिल रहे हैं, जो मैंने कभी ट्री में नहीं देखे थे वो भी. बट ये मुन्नार के रास्ते में ही आता है, सो इट इज़ नॉट समथिंग दैट जब आप मुन्नार पहुंच जाओ उसके बाद आप वापस आओ उसके लिए वर्थ नहीं है. अगर आप मुन्नार जा रहे हो रास्ते में तब आप यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो फॉर लाइक 20 minutes एंड यू कैन एक्सप्लोर दिस प्लेस. दाना नहीं खाना है इसका. माँ आ जाओ. नहीं मुझे नहीं खाना, खट्टा है ना. नहीं ये अंदर रख दो. नहीं ये तो उसको करते. ये मेरा फोटो ले रहे ना. ये हार्ड ही होता है ऐसे. नहीं क्या है बाहर का. तो ये क्या यूज होता है? ट्राई सीड है. रोस्ट करके ग्राइंड करके पाउडर करके इंग्रेडिएंट्स को अंडा पाउडर, कोको बटर ड्राई करके फिर आप इसका पाउडर करेंगे. After visiting the spice garden, we directly went to our hotel, the Amuse Vista, after which we went to a spa. We are really tired and now we want to get a spa. So right now I'm at this spa place that I'm going to tell you about. It's called Angel's Ayurveda and I think it's better. The rates here are better than any other resort spa because hotels that have spa, they're generally much more costly. So that's why we opted for this, and some locals also recommended this place, so we're here. So after a spa we kind of just relaxed and had juice and coffee and just roamed around a little at night. So the place that we were staying at wasn't really Munnar. It was a few kilometers before Munnar and mostly people live here because apparently the hotels and resorts in Munnar are not that good and might even cost you more. So that's why most people stay here. It is 13 kilometers before Munnar. So अभी सुबह के 8:10 हो रहे हैं and we just got ready. हम अभी नीचे ब्रेकफास्ट करने के आए हैं. After that we will go and explore Munnar and I'll tell you those places along the way. But one little thing I would like to tell you about Munnar is that I don't think it's a very good place to come in the months of March and April.
because it does get kind of hot, especially in the day. The nights and the mornings are good. So the first place that we went to in Munnar was the second mile viewpoint. It is something that comes up initially as you're entering Munnar, and it kind of shows a good view of the tea estates of Munnar. The next place that we went to was a tea museum and factory, which kind of showed how tea was first planted here in Munnar by the Britishers and how it has evolved since then, and also how tea is produced and was produced earlier and how the production has changed over time. We saw the whole process of tea making, how it's cut and how it's grinded and oxidized and later dried up and filtered. Light, medium, strong. In the same Ripple Tea factory, you can also buy the famous Munnar tea and also taste it and take it home for people back at home. And also there are other things like spices and essential oils that you can buy from here. अभी हम मडुपुट्टी डैम आए हैं यहाँ पर बोटिंग करने, स्पीड बोटिंग, और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइड्स टाइप, लाइक एक छोटा सा पार्क टाइप का। यहाँ पर बोटिंग का, अगर आप स्पीड बोटिंग करना चाहते हो तो 910 की पूरी बोट होगी और पर पर्सन इज़ 150। हम यहाँ आए, पोथामेडू व्यू पॉइंट है, यहाँ से सॉर्ट ऑफ मुन्नार का एक बर्ड्स आई व्यू है। We also went inside a tea garden and saw women picking tea. हेलो, तो हम एक प्लेस में हैं जहाँ
एयर बलून है, बट ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है. इसका मैक्सिमम हाइट इज़ 200 feet. सो आई एम कंसिडरिंग नॉट टू गो बिकॉज काफ़ी नीचे ही है. बट लेट्स सी, आई एम गोइंग टू सी समवन गो एंड सी कि कितना ऊपर है, बिकॉज जहाँ तक पेड़ हैं अगर वहीं तक जाता है तो कोई व्यू भी नहीं दिखेगा. But anyway, it cost 1,500 rupees per person. I actually decided not to do the hot air balloon because honestly it seemed too expensive for just 200 feet and I didn't feel like it was worth it. हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार. एंड अभी हम निकल रहे हैं मुन्नार से. कल हमारा फाइनल डे था मुन्नार में और यहाँ सुबह सुबह तो अच्छा मौसम है, काफ़ी चिली सा है. तो बेसिकली मुन्नार में रात को और सुबह का टाइम इज़ गुड, बट दिन में धूप की वजह से गर्मी होती है. स्पेशली आई थिंक इन दीज मंथ्स लाइक मार्च, अप्रैल, मई. तो और उसके बाद मई से यहाँ पर रेनी सीज़न शुरू हो जाता है. तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अभी तो डेफिनेटली दिन में है गर्मी, बट इट्स नॉट इवन टू मच कि आप नहीं आ सकते. कि आई फेल्ट लाइक मुन्नार वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. पूरे टी एस्टेट्स हैं हर जगह एंड आई रियली इन्जॉयड इट. बट आई couldn't see everything. Like there were a couple of things which I couldn't go to because they were pretty far away and we needed another day for that. But we have to go on further to another places. अभी हम कोचिन से निकल रहे हैं, उसके बाद हम जा रहे हैं LFP. So before leaving this place, I want to tell you what Munnar really means. Munnar means the three rivers in Malayalam, and it's because here in Munnar that there are these three rivers that I can't pronounce that meet, and that's why it's called Munnar. After Munnar we headed towards LFP, and to watch my experience at LFP backwaters, watch the next episode of my Kerala trip.